Hello guys, welcome to BioGuru to your own channel. Today we will discuss about extra embryonic membranes. देखिए एम्ब्रियो फॉर्मेशन के साथ साथ एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन एंड प्लेसेंटा का फॉर्मेशन भी होता है. Now there are four extra embryonic membranes in the human female. So during the development of the human embryo, four extra embryonic or fetal membranes are formed. First is amnion, second is allantois, third is YOLK SAC and fourth is chorion. तो फोर लेयर्स का फॉर्मेशन होगा. इनका फंक्शन है बेबी को बहुत सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड करना एंड प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना. डेवलपमेंट ऑफ द फीटल एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स हेल्प्स टू प्रोटेक्ट द एम्ब्रियो फ्रॉम फर्स्ट ऑफ ऑल डेसिकेशन से बचाएगा जिससे बेबी को ड्राई कंडीशंस ना मिले. देन मैकेनिकल शॉक या मैकेनिकल जर्क से प्रोटेक्ट करेगा. एक्सचेंज ऑफ गैसेस को एक्सचेंज में CO2 O2 और अदर गैसेस के एक्सचेंज में हेल्प करेगा. एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट, जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनके एब्जॉर्प्शन के लिए बिकॉज बेबी को न्यूट्रिशन रिक्वायर है. देन एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट, जो बेबी की बॉडी में बनने वाला जो वेस्ट है, नाइट्रोजनस वेस्ट है, उसे बॉडी से रिमूव भी करना होगा. सो द फॉर्मेशन ऑफ एमनियन एंड कोरियन इन ह्यूमन एम्ब्रियोज इज डिफरेंट फ्रॉम दैट इन द अदर एम्नियॉन्स. तो अदर एम्नियॉन्स से इनका फॉर्मेशन जो है वो अलग है. Then the epiblast adjacent to the trophoblast migrates away from the trophoblast forming the amniotic cavity. आपने बायोलेमिनर एम्ब्रियो पढ़ा था. तो बायोलेमिनर एम्ब्रियो में two layers थे, epiblast and hypoblast. So we are discussing about the epiblast. The epiblast adjacent to the trophoblast migrates away from the trophoblast and forming the amniotic cavity. The lining of the amniotic cavity is made up of cells called the amnioblast. Amniotic cavity के cells हैं, उनको अपने amnioblast कहा है, derived from the epiblast. And the amnion is filled with the water that is called amniotic fluid. Now hypoblast. The hypoblast is pushed down forming the lining of a cavity called YOLK SAC. तो YOLK SAC का formation already हम लोग पढ़ चुके हैं bilaminar embryo formation के अंदर. The chorion consists of an outer layer formed by the primitive ectoderm or trophoblast. Primitive ectoderm क्या था हमारा epiblast and hypoblast was primitive endoderm and an inner by the inner layer and inner by the somatic mesoderm, extra embryonic mesoderm from which the chorionic cavity is formed. So trophoblast, somatic mesoderm. Then the chorionic या chorionic membrane आप कह सकते हैं, chorion या chorion कहेंगे. The chorion undergoes rapid proliferation of cells and forms chorionic villi. And chorionic villi क्या थे? Endoderm, है ना, आपने पढ़ा था endoderm. तो अब जो chorionic villi है वो यूट्रस की endometrium, है ना. The chorionic villi invades the endometrium and helps in the transfer of nutrients and oxygen from maternal blood to the fetal blood. The chorion surrounds the embryo and other membranes. So सारी membrane surround किसने किया? हमारे chorion ने. Now soon a fourth membrane called allantois. Allantois develops as an outgrowth from the embryonic hindgut. The membrane of the allantois meets the inner surface of the chorion and forms a highly vascularized region called allantochorion. So allantochorion. And allantochorion contributes the fetal part of the placenta. दो main part हैं, fetal and maternal. The placenta facilitates a more effective and efficient part for exchange and passage of nutrients, respiratory gases, hormones, antibodies, etc. between the fetus and mother by the 12th week of the pregnancy. During organogenesis जब organs का formation होगा, regions of 3 embryonic germ layers develop into rudiments of the organs. तो पहले क्या बनेंगे? Rudiments बनेंगे, then वो organs में develop हो जाते हैं. Now some MCQs. The fluid that acts as shock absorber and prevents the embryo from desiccation is pleural fluid, cerebral fluid, amniotic fluid or chorionic fluid. Yes, it is amniotic fluid. The chorion develops a rich supply of blood vessels and forms an intimate association with somatopleure, then splanchnopleury, then mesenteropleure, or both 1 and 2. Yes, it is splanchnopleury.